he was he began to focus more on distributing Prabhupada books. तो प्रभुपाद पुस्तक वितरण में प्रभु जी ने ज़्यादा समय स्पेंड किया जब प्रभुपाद से जुड़े. And in 1974 he got formal initiation. 1974 में प्रभु जी का दीक्षा हुआ. तो आप इमेजिन कर सकते हैं 1974 से अभी तक प्रभु जी इस्कॉन के साथ हैं और कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, पूरे विश्व में लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं. And over the time he became Bhakta leader as well as university and high school lecturer on the Vedic viewpoint. And in 1978, His Grace Siddhant Prabhu, he joined Narasimhanand Prabhu as a partner in ISKCON TV. And he produced many classics such as the Acharya series, बहुत ही फेमस है आचार्य सीरीज, और द रामायण, कृष्णा पॉपेट शो, द वेजिटेरियन डॉक्यूमेंट्री हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, एज वेल एज द डॉक्यूमेंट्री कमिंग बैक रीइंकार्नेशन इन अमेरिका एंड मैनी मोर. सो हमें जो भी प्रभुपाद के वीडियोस मिलता है, हम आज आचार्य सीरीज इतना रिलीज करते हैं और अलग अलग वीडियोस करते हैं, तो उसके पीछे जो पर्सनालिटी है दैट इज प्रभु जी. So we are so fortunate to have his darshan today. So over 32 years now, Prabhuji has independently produced the Prabhupada Memory Series, which are video interviews of over 400 direct disciples of His Divine Grace, Srila Prabhupada. And the emphasis of the series is on the lessons imparted to these disciples as well as Vaishnava quality that Prabhupada exhibited while they were in his association. And the result of this work has produced 95 separate videos. So, and total 150 hours of inspirational and educational viewing pleasure. So, His Grace Siddhant Prabhuji, he is currently working on 6th book series. Basically, it is in the series which are edited transcription of the video interviews. तो प्रभु जी का 6th book है ये एक सीरीज है जिसमें ट्रांसक्रिप्शंस हैं अलग अलग वीडियो में, तो बहुत ही जिसमें हमें प्रभुपाद जी का ऑथेंटिक टीचिंग्स हमें मिलेगा. तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि प्रभुपाद डिसाइपल हिज ग्रेस सिद्धांत प्रभु हमारे बीच में हैं एंड ही इज गोइंग टू एनलाइटन अस टुडे. सो लेट्स वेलकम एंड एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टू प्रभु जी बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हिज ग्रेस सिद्धांत प्रभु की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की. धन्यवाद. Thank you very much. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. Okay. What is your name? चंचलापति दास. Thank you. So thank you for allowing me to come here and speak on Srila Prabhupada's behalf, actually. तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया और प्रभुपाद जी के गुणगान में कुछ कहने का अवसर प्रदान किया. The program today was going to be samples of my work, the videos where I've interviewed over 400 Prabhupada disciples, but it'll be more difficult to translate and difficult to stop the video for translation purposes. तो आज वैसे कार्यक्रम ऐसा होना था कि जो मैंने जो कार्य किया है, जो 400 वीडियो बनाए हैं प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स के इंटरव्यू पे, तो उसमें होना था, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ वीडियो का प्रदर्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, कठिन है. So I will try to remember some of the most popular stories in the series, and I'll stop after 1 or 2 sentences for translation purposes. तो फिर मैंने ये निर्णय लिया है कि जो उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्षण थे जिसमें मैंने इंटरव्यू लिया है, उसको मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और 2-2 लाइन बोलूँगा, फिर ट्रांसलेशन होगा उसका. Before I begin, maybe we can hear Srila Prabhupada chanting Jai Radha Madhava. तो शुरू करने के पहले हम प्रभुपाद जी के स्वर में जय राधा माधव सुनेंगे.
doing a good job. I brought in my backpack, right? Is that somewhere? I just don't want to lose it. I just don't want to misplace it. It has. Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girbanadari Gopi Jana Balava Girvanadari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Munatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nitinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunivari Paschita Destarane Om Jnanatimirandasya Gananjana Shlakshaya Chakshun Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namah. Srila Prabhupada Ki Jai. So, I will start by saying that oral histories are very important. तो मैं इस बात के साथ शुरू करना चाहूँगा कि जो भी इतिहास होते हैं वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. Just like the Goswamis, 6 Goswamis wrote down their memories of Lord Chaitanya and his instructions and his qualities from their interaction with Sri Chaitanya Mahaprabhu.
जैसे कि षड गोस्वामियों ने लिखा था चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं पे, उनके शिक्षाओं पे, उनके गुणों पे बहुत सारे किताब लिखे हैं. So this particular project that I started 32 years ago, Prabhupada Memories, now has, instead of 6 Goswamis, we have over 400 Goswamis telling us about Srila Prabhupada. तो अभी जो ये विशेष मैंने जो कार्य लिया है, जिसमें कि तकरीबन हमने 400 से अधिक जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उनसे जाना है प्रभुपाद के बारे में. तो यहाँ पे हम केवल 6 गोस्वामियों से नहीं बल्कि मोर देन 400 से ज़्यादा गोस्वामियों की चर्चा कर रहे हैं. So these stories are direct experiences that these disciples had with Prabhupada in various circumstances, such as morning walks, darshans, classes, festivals. तो ये जो प्रोजेक्ट है मेमोरीज ऑफ प्रभुपाद, इसमें जो उनके शिष्य हैं उनका प्रभुपाद के साथ खुद का व्यक्तिगत जो अनुभव है, चाहे सुबह की वॉकिंग के दौरान हो या दर्शन के दौरान हो या क्लास के दौरान हो या व्यक्तिगत उनका जो भी है, वो सब इसमें डाला गया है. The focus of my interviews are twofold. One is that I always ask for stories where there's a learning lesson involved. तो जो मैंने ये साक्षात्कार लिया है इनसे 400 से अधिक शिष्यों का, उसका 2 उद्देश्य है. एक तो पहले है केंद्र करना, कहानी के माध्यम से प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं वो समझने का प्रयास करना. And the second line of questioning when I interview these disciples are their realizations about Srila Prabhupada's qualities. और जो दूसरा उद्देश्य है इन शिष्यों से ये जानने का प्रयास किया कि उनका खुद का क्या अनुभूति है प्रभुपाद जी के गुणों के ऊपर. So the viewer or reader of these anecdotes can come away educated, more educated than before about Krishna conscious philosophy. ताकि इस बुक को पढ़ने के बाद जो श्रोतागण हैं जो पढ़ रहे हैं इसको, उनको और ज़्यादा अच्छे से पता चल पाए कृष्ण भावना में सिद्धांत क्या है और वो उसको और अच्छे से समझ सकें. But secondly, by hearing about the qualities that Srila Prabhupada exhibited, we can become more attached to Prabhupada as a person once we know how exalted he is by these actually 26 qualities. और दूसरा उद्देश्य ये है कि जब भक्त लोग इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद उनका प्रभुपाद के प्रति और आकर्षण बढ़ेगा, जब वो जानेंगे प्रभुपाद जी में क्या गुण थे और कैसे जब वो इस धराधाम पे थे उन्होंने इन गुणों का प्रदर्शन किया. तो इसको जान के हमारी और श्रद्धा बढ़ेगी प्रभुपाद के प्रति. As an example, Srila Prabhupada was once in Gainesville, Florida, giving an interview at a radio station. एक बार उदाहरण के लिए जब प्रभुपाद जी फ्लोरिडा में थे और एक रेडियो का इंटरव्यू दे रहे थे, and the radio announcer asked Prabhupada, who had been talking about Vaishnavism, the radio announcer asked, well, how would I know if I met a Vaishnav? तो वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहे थे रेडियो के जो सदस्य थे और वैष्णविज्म जो विषय था उस पर इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि मैं कैसे जानूं या समझूं कि आप वैष्णव हैं. And Srila Prabhupada immediately answered, you would know a Vaishnava because he is a perfect gentleman. तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उत्तर दिया कि आप जानेंगे कि कोई व्यक्ति वैष्णव है क्योंकि वो एक पूर्ण रूप से सभ्य मनुष्य है, सज्जन है, सज्जन पुरुष है. And these qualities of a perfect gentleman are mentioned in the Chaitanya Charitamrita as well as the Srimad Bhagavatam. 26 qualities. और जो एक सज्जन पुरुष है उनके जो गुण हैं ये चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम में इनका वर्णन है. 26 गुण बताए गए हैं. Does anyone know them by heart? कोई हृदय से इन 26 गुणों को जानता है? That's okay because I don't have them all memorized either. I have to look at a list. तो कोई बात नहीं, ये चलता है. यहाँ तक कि मुझे भी इतना पूरा याद नहीं, मैं भी देखता हूँ, देख के बताता हूँ. But some of them are gentle. He is gentle. He is kind. He is merciful. He is poetic. He is expert.
तो कुछ उसमें से है कि वो सज्जन हैं, वो उदार हृदय के व्यक्ति हैं, वो दक्ष हैं और दूसरों की मदद करने करते हैं, ऐसे कुछ कुछ गुण हैं. So once we understand, practically speaking, how Prabhupada is a perfect gentleman, we can come to appreciate him more and develop our love and attachment for him. तो जब हम व्यवहारिक तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे प्रभुपाद जी एक सज्जन व्यक्ति हैं, तो हम और उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उनके और निकट आ पाएंगे. Krishna also states, there's also mentioned in the Bhagavatam, how Krishna appreciates when his pure devotee is glorified. तो भागवतम में भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो कैसे प्रसन्न होते हैं जब उनके शुद्ध भक्तों का गुणगान किया जाता है. One story that I will tell you now gives example of the importance of becoming attached to Srila Prabhupada. तो एक कथा अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कितना महत्वपूर्ण है अगर हम प्रभुपाद जी के साथ आसक्त होते हैं, अपना निकटतम उनसे बनाते हैं. तो In Mexico City, Srila Prabhupada was giving a lecture from about the Gita, where Krishna says, "If you think of me at the time of death, you will come to me." तो एक बार मेक्सिको में कथा करते समय प्रभुपाद जी भगवत गीता से बता रहे थे कि जब कृष्ण कहते हैं कि जब मृत्यु के समय अगर तुम मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास आओगे. At the end of the class, they opened it up for questions. तो जब कथा खत्म हुई तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुआ. One lady who was not a initiated devotee but a congregational member asked said to Srila Prabhupada, she raised her hand and then asked, तो एक महिला थी जो कि उस समय दीक्षित नहीं थी लेकिन मंदिर आती थी, तो उन्होंने हाथ उठाया और एक प्रश्न पूछा. She said to Srila Prabhupada, you've been explaining how if we think of Krishna at the time of death, we will come to Krishna, we will go to the spiritual world to be with Krishna. तो उस महिला ने बोला कि प्रभुपाद जी आपने बताया कि जैसे मृत्यु के समय जब हम कृष्ण का चिंतन करेंगे तो हम कृष्ण के पास जाएंगे, कृष्ण के धाम जाएंगे. Srila Prabhupada said, yes. प्रभुपाद जी ने कहा हाँ. Then the lady said to ask Srila Prabhupada, but what if I think of you at the time of death? Will that have the same effect? तो फिर उस महिला ने कहा कि क्या हो अगर मैं मृत्यु के समय आपका चिंतन करूं तो क्या सेम रिजल्ट मिलेगा मुझे. Srila Prabhupada closed his eyes for a second. प्रभुपाद जी ने अपना आंख थोड़ी देर के लिए बंद किया. He opened his eyes and smiled and said, yes, that is very nice. फिर उनके बाद उन्होंने आंख खोला और मुस्कुराते कहा हाँ वही रिजल्ट मिलेगा. So another reason to not only read Prabhupada's books, but to hear of his interactions, not only with devotees, but members of the public, whereby we can learn more about him and become more attached to him. Just like in the Krishna book, where we learn about Krishna's qualities and his pastimes, we develop attraction and attachment and love for Krishna. तो मेरा उद्देश्य ये है कि ये जो मेमोरीज प्रभुपाद जी की मेमोरी सीरीज बुक है, इसको खाली पढ़ना ही नहीं है, इसको पढ़ के सुन के हमारा प्रभुपाद के प्रति आकर्षण बढ़े. जैसे कि कृष्णा बुक हम पढ़ते हैं, कृष्ण बुक पढ़ के उसमें सुन के लीलाओं को श्रवण करके हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ता है. Even though Srila Prabhupada majority of the time is a guru, meaning heavy, we come to know that Srila Prabhupada is a person, that he has more to his character and his personality than just preaching philosophy. तो ऐसे तो प्रभुपाद जी गुरु हैं और गुरु का मतलब है भारी गंभीर, लेकिन हम जब प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वो एक व्यक्ति हैं और उनके अंदर भी ऐसे गुण हैं और चरित्र हम जानेंगे. केवल यही नहीं कि बस फिलॉसफी के बारे में बोल रहे हैं वो. For example, Srila Prabhupada has a sense of humor and a great wit. उदाहरण के लिए कि प्रभुपाद जी बहुत ही हंसमुख भी हैं, मजाकिया भी हैं और बहुत ही उनमें विवेक भी है. One day in the early days in San Francisco, Srila Prabhupada came out of his house, and a female disciple, came up to Prabhupada and said, "Oh, Prabhupada, you look so nice today." And Prabhupada said, "Oh, just today?"
तो एक बार जब शुरुआती दिनों में सैन फ्रांसिस्को में अपने निवास स्थान से प्रभुपाद जी बाहर आए तो एक उनकी महिला दीक्षित शिष्या ने कहा, प्रभुपाद जी आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। तो प्रभुपाद ने बोला, केवल आज? Another time to show Prabhupada's wit was when he went to the United Kingdom and he was in London. And a devotee named Tribhuvanath was riding in the car with Prabhupada. Tribhuvanath. तो एक बार जब यूनाइटेड किंगडम लंदन में प्रभुपाद जी थे और कार से जा रहे थे तो उनके कार चला रहे थे श्री भुवनाथ प्रभु। And they were driving by Buckingham Palace. और वो बकिंगम पैलेस के आगे से जा रहे थे। And the guards are there with the big furry hats, you know? तो जो अंग्रेज गार्ड होते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा फर वाला टोपी पहनते हैं, आप लोग ने देखा होगा। And Tribhuvanath saw them and pointed out that one of the guards, the queen's guards, has become a devotee. तो फिर जब भूवनाथ जी ने उनको देखा तो बोला कि एक इनमें से जो गार्ड हैं वो भक्त बन गए हैं। Srila Prabhupada said, "Oh, what about the queen?" तो प्रभुपाद जी ने बोला, अच्छा महारानी का क्या हुआ? So he another time, Shrutakirti. You all know Shrutakirti Prabhu? Prabhupada's servant for 2.5 years. He tells a story where he was with Prabhupada as he was finishing his rounds. तो एक बार सुतकीर्ति प्रभु जो कि प्रभुपाद जी के पर्सनल सेवक थे, वो बता रहे थे जब प्रभुपाद जी ने अपना जप किया। Srila Prabhupada finished his rounds. He finished the 16th round and he pulled down the counter bead and said, "Now I've finished all my rounds. I can do any damn thing I please." तो फिर प्रभुपाद जी ने जब अपना पूरा आखिरी 16 माला खत्म कर लिया तो उसके बाद माला रख के बोलते हैं, मैंने अब अपना माला कर दिया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Little sense of humor. तो ये उनका मजाक का अंदाज था। Not giving us, license to go off do nonsense, but तो इससे हम कोई गलत शिक्षा ना ले लें अपने में। But Prabhupada knows the heart of all of his disciples. तो प्रभुपाद जी सारे शिष्यों के हृदय को जानते हैं। I'll tell one or two more stories about Prabhupada's humor and his wit. This is a famous story told by Vamanajan Prabhu. Vamanajan. वामनजान प्रभु ने प्रभुपाद जी के बारे में एक बहुत ही प्रख्यात कथा सुनाई है। Vamanajan tells me that he joined with a friend of his from school. His name is Bhaskar. तो वामनजान प्रभु अपने स्कूल के एक मित्र के साथ जुड़े थे जिनका नाम था भास्कर। At this time in the movement, the early 70s, there was a lot of hooligans. You know what hooligan is? In West Virginia, New Vrindavan, and they were shooting guns. तो ये 1970 के शुरुआती समय का टाइम था, तो उस टाइम बहुत हुड़दंगी थे, तो वो लोग वेस्ट वर्जीनिया न्यू वृंदावन में बंदूक से गोली चला रहे थे। So when Srila Prabhupada came to New Vrindavan, they thought it best that there be a bodyguard for Prabhupada. तो जब प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन आए तो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी के लिए हमें एक अंगरक्षक रखना चाहिए। So this bodyguard in the beginning was working 24 hours a day as a bodyguard. तो ये जो अंगरक्षक थे 24 घंटे प्रभुपाद जी के साथ रहते थे। But it was too difficult to maintain. Who can go 24 hours without sleeping? Impossible. तो ये बहुत ही मुश्किल था क्योंकि 24 घंटे बिना सोए हुए कोई कैसे सेवा कर सकता है। So they decided, the management decided to have 3 devotees break up the 24 hours into 8-hour segments. तो फिर जो मैनेजमेंट लोग थे उन्होंने निर्णय लिया कि 3 अंगरक्षक रखे जाएंगे, बारी बारी से 8 घंटे वो लोग सेवा करेंगे। So Bhaskar had 8-hour segment, and then Vamanajan had another 8-hour segment. तो उसमें भास्कर प्रभु जी को एक 8 घंटे का सेवा करना था और फिर एक 8 घंटे का वामनजन प्रभु को। When they came to Los Angeles, Bhaskar had the morning session to guard Prabhupada, and he noticed that Prabhupada's schedule and the way Prabhupada lived, you could set your watch to his activities. तो जब लॉस एंजलिस आए तो भास्कर प्रभु को सुबह के
दौरान सेवा करना था और उनको पता था प्रभुपाद जी का क्या दिनचर्या रहता है। मतलब प्रभुपाद जी का दिनचर्या इतना फिक्स था कि उनके दिनचर्या के हिसाब से आप अपना घड़ी का समय सेट कर सकते हैं। Bhaskar told Vamanajan, he said, you know, Prabhupada, his activities were so regulated that I know exactly what he's going to do every day. तो भास्कर प्रभु जी वामनजन प्रभु को बोलते हैं कि आपको पता है प्रभुपाद जी की क्रिया इतना बढ़िया तरीके से नियंत्रित है कि और मैं उनको जानता हूं, मैं बता सकता हूं किस कब समय वो क्या करेंगे। In fact, Bhaskar said, I saw that Prabhupada leaves his shoes, his slippers, at the entrance to the temple in Los Angeles, and I'm going to get a pair of slippers just like that, the same size as Prabhupada. Last line, pardon? Bhaskar? So Bhaskar knew that Prabhupada left his slippers at the doorway before entering the temple. And so he went out and bought a pair of slippers exactly like those slippers that Prabhupada wore. तो भास्कर प्रभु ने बताया लॉस एंजल्स मंदिर में जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ठीक प्रवेश द्वार पे उन्होंने अपना चप्पल छोड़ दिया था और उन्होंने उनको डिस्क्रिप्शन दिया और वामनजान प्रभु ने एग्जैक्टली वही चप्पल उठा के लाए। Vamanajan said, well, your feet are much bigger than Prabhupada's. Why do you want to get the same pair with the same size? Your feet won't fit in there. मैं समझा नहीं फिर से बोलिए। तो उन भास्कर प्रभु ने वामनजान प्रभु के आपने एकदम सेम वही चप्पल लाई जो जैसे बताया था वही लाया आप सेम साइज का। Yeah. So Bhaskar told him, he said, well, here's what my plan is. तो भास्कर प्रभु ने बोला यही तो मेरा प्लान है। When Prabhupada takes his shoes off to go into the temple to greet the deities, I'm going to switch my new pair of slippers with Prabhupada's slippers, and then Prabhupada after class will slip in the slippers that I bought for him. He'll walk up the stairs to his quarters, he'll take off his shoes at the door, and then when he goes into his room, I'm going to give back his original slippers, and I'll take back the one pair that he wore at least one time. I will have slippers that Prabhupada wore as prasad. तो भास्कर प्रभु ने अपना प्लान बताया कि मैं चाहता हूं जब प्रभुपाद जी दर्शन करने मंदिर में आते हैं और अपना चप्पल खोलते हैं तो उनका स्लीपर हटा के मैं नया स्लीपर जो लाया वो रख दूंगा और फिर कथा के बाद जब वो ये स्लीपर पहन के अपने कक्ष तक जाएंगे फिर वहां पे मैं उनका रख के तो मेरे को कम से कम उनका चप्पल प्रसाद का प्राप्त हो जाएगा। Vamanajan said, oh, that sounds like a good idea. तो वामनजन प्रभु बोला ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। He said, you should tell me where to buy the shoes and I'll do that too. तो उन्होंने बोला मुझे बताओ कहाँ से ये जूते खरीदने ताकि मैं भी फिर ऐसा करूंगा। So a few days later, Vamanajan went to Bhaskar. Okay, he said, where do I buy my shoes? I want the prasad too. तो वामनजन प्रभु बोला मैं कहाँ से जूते खरीदूं, मुझे भी अपना प्रसाद चाहिए। Bhaskar said, no, you shouldn't do it. तो भास्कर प्रभु ने कहा नहीं तुमको ये नहीं करना चाहिए। And Vamanajan said, well, you got yours. What about me? You know, don't be selfish. तो वामनजन प्रभु ने बोला तुम स्वार्थी मत बनो, तुम्हें तो अपना प्रसाद मिल गया लेकिन मेरा क्या होगा। Bhaskar said, no, I'll tell you what happened. तो भास्कर प्रभु ने बोला नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा क्या हुआ उसके बाद। Bhaskar said the Prabhupada after class put on the slippers that Bhaskar had bought, walked up the stairs, and walked right into his room with the slippers on. भास्कर प्रभु ने बोला कि प्रभुपाद जी ने जब वो जो नया चप्पल मैं लाया था उसको पहन के अपने कक्ष तक गए तो सीधा चप्पल पहने अपने कक्ष के अंदर प्रवेश कर गए। Bhaskar was shaking in his boots. Of course, he didn't wear boots, but he was shaking in his socks. तो भास्कर प्रभु कांप रहे थे अपने जुराबों के अंदर। And then Vamanajan said, well, what did you do? तो फिर वामन प्रभु ने फिर तुमने क्या किया? Bhaskar said, well, I was outside Prabhupada's room chanting Hare Krishna, Hare Krishna. He didn't know what to do. तो मैं घबराहट था और मैं प्रभुपाद जी के कक्ष के बाहर जप कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। A few moments later, a sannyasi, Prabhupada's servant, came out. कुछ क्षण बाद प्रभुपाद जी के एक सन्यासी शिष्य बाहर आए। He said, are you Bhaskar?
उन्होंने कहा क्या तुम भास्कर हो? Yes. हाँ. The sannyasi said, well, Srila Prabhupada has a message for you. तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी का आपके लिए एक संदेश है. Number one, thank you very much for the new slippers. तो पहला ये है कि नए चप्पल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And you may keep the old slippers. और आप पुराना रख सकते हैं. But number three, and most importantly, it is not nice to play tricks on the spiritual master. लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने गुरु के साथ है ना चाल नहीं चलनी चाहिए. That was from Vamanajan Prabhu. तो ये था वामनजन प्रभु के साथ लीला. So it's just an example of Prabhupada's compassion because he didn't get angry at him. तो ये एक उदाहरण है प्रभुपाद जी की करुणा का क्योंकि वो गुस्सा नहीं हुए उसमें. He gave him prasad. उन्होंने उनको प्रसाद भी दिया. What ultimate compassion is there? तो इसमें पूर्ण Guru prasad. तो ये प्रसाद था, उन पे करुणा थी, ये कृपा थी. And at the same time, besides showing his quality of compassionate, he gave us a great lesson that we need to take the spiritual master seriously. तो इन करुणा के साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही गंभीर शिक्षा भी दी कि हमें गुरु को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए. Jai. जय. Another example of Prabhupada's connection with Krishna, direct connection with Krishna. Well, I'll tell you my story, one story from me. तो मैं आपको अभी अपना खुद का एक कथा बताऊंगा प्रभुपाद जी के साथ. So the first time I had read Prabhupada's Bhagavad Gita, and before that was convinced of Prabhupada's philosophy by reading the Back to Godhead magazine in Dallas, Texas in 1971. तो 1971 में मैंने प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़ी थी और उससे पहले बैक टू गॉडहेड मैगजीन पढ़ी थी और उनको पढ़ के मैं प्रभुपाद जी कृष्णा कॉन्शियस जो सिद्धांत है उससे संतुष्ट था. So just from that first article I read in the Back to Godhead magazine, it answered all the internal questions I ever had and more. तो जो मैंने सबसे पहला ही आर्टिकल पढ़ा था बैक टू गॉडहेड मैगजीन में, उसके द्वारा मेरे जो भी आंतरिक जो भी मेरे जिज्ञासा थी वो सारी उससे दूर हो गई थी. So about 4 or 5 months later, Prabhupada actually came to Dallas, Texas. तो 4-5 महीने बाद प्रभुपाद खुद डैलस टेक्सास में आए थे. In 1972. 1972 में. We greeted Srila Prabhupada at the airport and drove him back to the temple. तो हमने प्रभुपाद जी का जो विमान स्थल था वहाँ पे स्वागत किया और उनको मंदिर लेके आए. And Srila Prabhupada gave a lecture about the importance of chanting Hare Krishna. और प्रभुपाद जी ने वहाँ जप के महत्व के ऊपर कथा किया. At the end of the lecture, again, another opportunity for questions to be asked of Prabhupada. तो कथा के बाद फिर प्रभुपाद जी से हमें प्रश्न पूछने का अवसर मिला. The very first question, a congregational member, not a disciple, asked Prabhupada, thank you, pointed, he was 10 feet away from Prabhupada, so he was right in front of Prabhupada. And he said, well, you've been talking about the importance of chanting Hare Krishna, but what do you feel? What do you personally feel when you chant Hare Krishna? Pointing to Prabhupada. And without hesitation, within a heartbeat, Prabhupada sat back in the Vyasasana and said, I feel no fear. I feel? I feel no fear. तो एक गृहस्थ भक्त जो कि प्रभुपाद जी से जस्ट 10 फीट की दूरी पे थे, उन्होंने प्रश्न किया उंगली दिखाकर प्रभुपाद जी की तरफ से, पहले आप बताइए कि आप कैसा अनुभव करते हैं जप करते समय, आपको क्या अनुभव होता है. तो प्रभुपाद जी एकदम से पीछे होके बोले कि मेरे को किसी भी प्रकार का भय नहीं महसूस होता है जप करने से. So Prabhupada's response was so immediate that it hit my heart, that I knew it to be the absolute truth. तो प्रभुपाद जी का जो उत्तर इतना तुरंत आया कि उसने मेरे हृदय में प्रभाव किया और मैं समझ गया कि जो कह रहे हैं वो एकदम सत्य कह रहे हैं. And without any mental speculation or thinking on my part,
I knew that Prabhupada and Krishna were like this. तो बिना किसी प्रकार का मैंने मन में कल्पना किए बिना या किसी उसके मैं समझ गया था कि प्रभुपाद और कृष्ण बहुत ही अंतरंग तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. So, Hare Krishna. So another example how Prabhupada is in connection with Krishna all the time. There is a story about how the Krishna book came to be printed. तो एक और कथा आ रही है जिससे हम जानेंगे कैसे प्रभुपाद हमें निरंतर कृष्ण से जुड़े रहते हैं. ये कृष्ण बुक की छपाई से कथा से रिलेटेड है. In the early 70s, there were six disciples of Prabhupada who went to England, to the United Kingdom. तो 1970 के शुरुआत में 6 अनुयायी थे प्रभुपाद जी के जो लंदन गए थे प्रचार करने के लिए. Shamashundar, Malati, Mukunda Goswami, Janaki, Gurudas, Yamuna. and Jamuna. So they had a plan before they went that they were going to meet the Beatles. They are going to meet The Beatles. बीटल्स. तो वो जो 6 भक्त थे उनका ये योजना था कि पहले वो जाके बीटल्स से मिलेंगे. So that was the plan. That was the mission, to become friends with the Beatles, who were the biggest rock and roll group on the planet at the time. They probably still are, but we don't have to talk about that. But that was the plan, to meet the Beatles, because they were the most famous. तो इनका ये योजना था कि हम बीटल से मिलेंगे और उनसे जान पहचान बढ़ाएंगे क्योंकि उस समय वो सबसे प्रख्यात म्यूजिकल ग्रुप थे. So Prabhupada's instruction to those 6 disciples were to make friends with the Beatles. Just give them prashadam. Don't ask anything of them. Just give them. तो प्रभुपाद जी का उन 6 अनुयायियों से ये निर्देश दिया उन्होंने कि आप उनसे जान पहचान बढ़ाइए, मित्रता बढ़ाइए, कुछ मांगिए मत, उनको प्रसाद दीजिए और जान पहचान बढ़ाइए. However, a short time later, Prabhupada had finished writing the Krishna book. और कुछ समय बाद प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक का लेखन का कार्य संपन्न कर लिया था. But the BBT did not have the funds to print the books. लेकिन उस समय बीबीटी के पास पर्याप्त धन नहीं था कि उसका प्रिंटिंग कर सके. So Srila Prabhupada asked Shamashundar to come into his room. तो प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर को अपने कक्ष पे बुलाए. I see some shaking of the head. You know this story? कुछ लोग सर हिला रहे हैं. क्या वो कथा जानते हैं पहले से? No? Okay, good. I like to tell fresh stories. तो मुझे अब नया कहानी सुनाना पड़ेगा. So Shamashundar came in to see Srila Prabhupada, and Prabhupada told him, he said, I have this Krishna book, and it's ready to be printed, but we don't have any money to print these books. तो प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु से कहा कि मेरी जो कृष्णा बुक है वो तैयार है लेकिन हमारे पास धन नहीं है इसको छापने के लिए. Shamashundar, yes. श्याम सुंदर प्रभु ने कहा हाँ. Prabhupada said, I want you to go ask George Harrison to donate the money to print this book. तो मैं चाहता हूं कि आप जाएं जॉर्ज हरिसन के पास और उनसे कहें कि इस बुक को छापने के लिए वो दान दें. Shamashundar said, oh no, I don't think that's a good idea, Prabhupada. तो श्याम सुंदर प्रभु मन में ही सोच रहे नहीं ये तो ठीक बात नहीं होगी प्रभुपाद जी. Shamashundar was very close with George Harrison. तो श्याम सुंदर प्रभु जॉर्ज हरिसन के बहुत ही निकटतम मित्र थे. Shamashundar told Prabhupada, it's not, he said, I agree with your original plan not to ask anything of them. Just give them everything, but now it might ruin our relationship. तो श्याम सुंदर प्रभु बोलते हैं कि आपका जो पहले का योजना था मैं उसके सहमत हूँ. हमें उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, बस उनसे अभी केवल प्रसाद दें और व्यवहारिकता रखते हैं. Prabhupada said, don't worry, you'll see. तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, तुम जाओ. Krishna has a plan. कृष्ण की अपनी योजना है. So what could Shamashundar do? He has to follow the order of the guru. तो श्याम सुंदर प्रभु क्या कर सकते थे? उनको गुरु की आज्ञा माननी थी. So a few days, maybe a week later, don't quote me on the time difference between meeting Prabhupada and actual asking of George, but a short time later. तो कुछ
दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद, जब प्रभुपाद जी ने ये आदेश दिया था, उसके बाद श्याम सुंदर प्रभु मिले उनसे. So Shamashunda was always thinking, how am I going to broach this subject to George Harrison? तो श्याम सुंदर प्रभु सोचे थे कैसे मैं इस चर्चा को उठाऊं जॉर्ज हरिसन के सामने. So there one day, Shamashunda was with George Harrison and David Wynn, who is the sculptor laureate in the United Kingdom. तो एक बार श्याम सुंदर प्रभु जॉर्ज हरिसन के साथ थे और वहीं पे एक डेविड थे जो इंग्लैंड के क्या थे. David Wynn, he was the sculptor laureate, and he sculpted the bust of Queen Elizabeth, and he sculpted the bust of the Beatles. तो वहीं पे डेविड विल थे जो कि एक शिल्पकार थे, वो भी उपस्थित थे उस जगह पे. So that day, George Harrison had donated the money to buy the marble slab for the altar of the deities. 5,000 pound slab. You can imagine how much that cost. So they came back after they purchased the marble slab for the altar and had dinner at David Wynn's house. तो उसी दिन जॉर्ज हरिसन ने अपने घर में अर्चा विग्रह के एल्टर के लिए मार्बल के लिए डोनेशन दिया था 5,000 पाउंड. तो वो मार्बल वालों से डील करके वापस आके डेविड विल के घर पे वो लोग मिल रहे थे. So all throughout dinner, Shamashunda is thinking to himself, what am I going to say? How am I going to broach this subject to George? While he's eating, he's just, beads of sweat are coming down. तो जब डिनर कर रहे थे तो उस टाइम श्याम सुंदर प्रभु सोच रहे थे कि कैसे मैं बात करूं, कैसे बात छेड़ूं, और यही सोच सोच के घबराहट में उनके माथे से थोड़ा थोड़ा पसीना निकलने लगा. So finally dinner ends and Shamashunda has a moment to the side with George Harrison. तो आखिरकार डिनर खत्म हुआ और श्याम सुंदर प्रभु को एक मौका मिला जॉर्ज हरिसन के साथ मिलने का, पर्सनली मिलने का. And he finally gets enough courage and he says, George, Srila Prabhupada wanted me to ask you a question. तो श्याम सुंदर प्रभु ने हिम्मत जुटाकर जॉर्ज हरिसन से प्रभु से कहा कि श्रील प्रभुपाद जी ने आपके लिए मेरे द्वारा एक संदेश भेजा है. Shamashunda told me that he wanted to make Prabhupada the bad guy. You want to make Prabhupada? Prabhupada the bad guy. He was shifting the... अच्छा. तो श्याम सुंदर प्रभु चाह रहे थे कि वो अपने को बचाए और प्रभुपाद जी को पिक्चर में लाए ताकि दोस्त जो भी हो प्रभुपाद जी पे जाए. तो इसे प्रभुपाद जी का नाम लेके बता रहे कि संदेश भेजा है. So Shamashunda said that there's this Krishna book that Prabhupada wrote, and he explained what the Krishna book was and was about, explaining to George why it was necessary to print this book. तो श्याम सुंदर प्रभु ने बताया कि प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक लिखा है और उन्होंने उनको बताया कि कृष्णा बुक है क्या, इसकी क्यों जरूरत है, और प्रभुपाद जी चाहते हैं कि इसका प्रिंटिंग हो. And while he's explaining this, he says, and Prabhupada would like you to donate the money, which is $19,000. And back in those days, that was a lot of money. तो श्याम सुंदर प्रभु जी ये समझा रहे थे और फिर समझाते समझाते बोले कि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि आप इसकी प्रिंटिंग के लिए जो $90,000 है वो दान दें. While Shamashunda is explaining this to George, Shamashunda said that he saw George's eyes go like this. I don't know if you can see in the back. George's eyes were going like this. तो श्याम सुंदर प्रभु जी ने देखा जब वो ये चीज़ बता रहे थे जॉर्ज हरिसन को, तो जॉर्ज हरिसन की आंखें चकराने लगी, चारों तरफ ऐसे घूमने लगी. Shamashunda was feeling that George was thinking that, oh, just another group that just wants something from me, just wants to take my money, just like another group. तो श्याम सुंदर प्रभु मन ही में विचार कर रहे थे कि जॉर्ज हरिसन प्रभु सोच रहे होंगे कि ये भी बाकी लोगों की तरह मेरे से मेरा पैसा लेना चाहते हैं. Now, just at that moment, when George was rolling his eyes like that, like in disgust, तो जस्ट ठीक उसी क्षण जब जॉर्ज हरिसन प्रभु अपना आंख घुमा रहे थे तो एक वो अचंभित हुआ. at that moment, there was a bolt of lightning and thunder that hit their house simultaneously. तो उसी क्षण बिजली ने और कड़ाके ने एक साथ उनके घर पर प्रहार हुआ उनका. You know, when lightning strikes, you count 1, 1,000, 2, 1,000 to determine how far away the actual lightning. You see it, and then when you hear the sound,
that length of time will determine how far away that thunderbolt actually hit the earth. तो जब ऐसे वातावरण होता है, जब बिजली कड़कती है और उसके बाद आवाज होता है धड़धड़ा के, तो आपको पता नहीं चल पाता वो कितने दूर हुआ है, क्या हुआ है, लगता है कि यहीं हुआ है. But this lightning and thunder hit simultaneous. In other words, that lightning bolt hit the house. David Wynn's house, it hit the house, and all the lights went out for like 10 minutes. तो जैसे जनरली क्या होता है, पहले बिजली चमकती है, फिर थोड़ी देर बाद आवाज होता है, लेकिन इस क्षण पे क्या हुआ, बिजली भी कड़की और आवाज भी हुआ, दोनों एक साथ हुआ, एकदम डेविड विल के घर पे हुआ, 10 मिनट के लिए पूरी रोशनी चली गई. So Shama Sundar and George were silent for that 10 minutes or so. Not a word was spoken. तो वो 10 मिनट के लगभग श्याम सुंदर प्रभु और जॉर्ज दोनों ही एकदम शांत थे, कोई किसी की तरफ से कोई हलचल, कोई क्रिया नहीं हो रही थी. Finally the lights came on. और फिर बिजली आई. And George said to Shama Sundar, "Well, how much did you say it was?" तो जॉर्ज हईसर प्रभु ने श्याम सुंदर से प्रभु से पूछा, अच्छा आप कितना मांग रहे थे दान? So George got the message from the Supreme Lord, I guess through Indra. तो जॉर्ज हईसर को भगवान की तरफ से संदेश मिल गया था कि इनकी मदद करें. And he immediately surrendered the $19,000 to print the book. और उसी समय उन्होंने $90,000 दे दिया. So when Srila Prabhupada said, "Don't worry, it will work out," Prabhupada knew that Krishna had a plan. So that's another indication of how Srila Prabhupada is not just an ordinary spiritual master. तो जब श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा था कि आप चिंता ना करें, कृष्ण की योजना है, हो जाएगा, तो इससे पता चलता है कि कैसे श्री कृष्ण श्रीला प्रभुपाद कोई साधारण गुरु नहीं है, वो कृष्ण के साथ बहुत ही निकटतम उनका संबंध है. Maybe we can stop and maybe there's a question. तो हम यहाँ पे रोकते हैं, अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं अपना. माइक है और किन्हीं का प्रश्न है? माइक है और प्रभु जी? किन्हीं का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अपनी जगह पे खड़े होके. पहले वेचन प्रभु आप पूछिए. The mic so everyone can hear the question. Few people say that when Srila Prabhupada went to USA, that time situation was like that only because everything was favorable for Srila Prabhupada's preaching. Means war was going on and people were inclined to accept spirituality. So what are your understanding about this thing? Was situation favorable that time when Srila Prabhupada went to America for preaching? प्रभु जी का प्रश्न है कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो I couldn't understand so well. अच्छा, प्रभु जी, he is asking that when Srila Prabhupada went to West, that time the situation was favorable for preaching Krishna consciousness because war was going on and people were very disheartened. So they were favorable to accept Krishna consciousness. So it was easy. Few people say that. So what is your opinion on this? Can I translate in Hindi? I agree. प्रभु जी, तो प्रभु जी ने प्रश्न किया था कि जब प्रभुपाद जी पश्चिम देश में गए थे तो उस समय जो परिस्थिति थी वो अनुकूल थी कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए. तो इसमें आपका क्या मत है? तो प्रभु जी बोल रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ. No, we can see from the history that Srila Prabhupada met his spiritual master Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in the 20s. I don't know the exact date, but it took 22. So Prabhupada took, so 65, Prabhupada came in 65, 22, that's 43 years. Is that my math right? So it's a matter of timing, and Krishna's in control. You know, myself have little faith in thinking that Krishna is in control. But from this analysis of the history, that here we have Srila Prabhupada, who was actually Krishna conscious from his birth. He explains how he was doing Rath Yatra at 4 or 5 years old. So he was certainly,
qualified, and we have the story where Prabhupada spoke, probably the only time that I know in my 32 years of collecting these oral histories, I have only one example where Prabhupada himself describes how he was in the spiritual world, and Krishna said, I want you to go down and write those books. And Prabhupada said, no, I don't want to go there. तो अगर हम इतिहास में देखेंगे तो प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से 1922 में पहली बार मिले थे और 1965 में वो पश्चिम देश में प्रचार करने आए, तो तकरीबन 43 साल का गैप के बाद आए। तो इसमें कृष्ण का प्लान है और प्रभुपाद जी बचपन से ही कृष्ण भावना में थे। हम पढ़ते हैं कि वो बचपन में ही रथ यात्रा निकालते थे और वो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित थे, वो सक्षम थे प्रचार करने के लिए। तो बिना कृष्ण की योजना के और ऐसा नहीं हो सकता था। और दूसरा, जब मैंने जो ये प्रभुपाद मेमोरीज की जो श्रृंखला बनाई, तो इसमें मैंने जो इंटरव्यू किए उसमें एक बार स्वयं ऐसा बताया भक्तों ने कि प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं तो आध्यात्मिक जगत में था, मुझे भगवान ने भेजा नीचे कि जाओ तुम जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करो और पुस्तकें लिखो कृष्ण भक्ति की। So Prabhupada said, I don't want to go there. तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, मैं नहीं जाना चाहता नीचे। But Krishna said, no, I'll take care of everything, I'll take care of you, just go down and write those books. तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं सारे चीज का जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं सब चीज ठीक करूंगा, तुम बस नीचे जाओ और पुस्तकें लिखो। So this is a Shaktavesha avatar. This is someone who, from his mouth, is describing that he was with Krishna, and now he's spreading Lord Chaitanya's mission. So it took 43 years for him to come. So it was not out of lack of desire to satisfy his spiritual master's order, although there was some, at the time he described some anxiety about leaving his family. But his spiritual master came to him in a dream 3 times. And so he took that as the direction from his spiritual master to go to the West. That was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's desire. That once you get money, you go print books. So who knows Krishna's plan, whether that was, in the 60s with the hippies and people that were disgruntled with their own religion and the state of the government with so much war. It just so happened that was ripe for Prabhupada to bring the philosophy of Krishna consciousness to the West. We don't know Krishna's plan. So we just have to go on and do our duty and leave it up to Krishna how things will end up. तो हम कृष्ण का प्लान नहीं समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी जब जा रहे थे 43 इयर्स के गैप के बाद प्रचार करने, तो वो खुद भी घबराहट में थे, कैसे मैं परिवार को छोड़ूं। तो 3 बार उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनके स्वप्न में आए और उन्होंने बोला नहीं, तुम जाओ प्रचार करने, तुम जाओ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार करो। तो फिर प्रभुपाद जी आए और ये कृष्ण की प्लान थी कि उस समय में सारे सिचुएशन ऐसे बने कि वहाँ के लोग सरकार से नाराज थे, खुद जो वहाँ के धर्म का अनुयायी थे उनसे नाराज थे और युद्ध चल रहा था। तो ये सब कृष्ण का प्लान है, हम नहीं समझ सकते। हमारा काम है जो हमें बोला गया है वो करते रहना, हमको ये सब नहीं सोचना है। तो हम कुछ इसमें कह नहीं सकते। And who knew that the people, the devotees that were coming at that time, were disgruntled. And that is a symptom of one surrendering to God, one who's in distress, in need of money, inquisitive, in search of knowledge. So that was a time that was ripe for those that were distressed. They were hippies, they were certainly poor, they didn't have much money, and they were inquisitive. And when Prabhupada brought the teachings from the East, they could see here is the absolute truth. And that was my feeling too, that here was somebody that I could trust totally, that this person was not here to exploit me. And Prabhupada is so unique in that way, and that came through just by being with him, that he was not out to just to get money from followers. That was not Prabhupada's mission. Prabhupada knew that Krishna would provide everything.
That's a sign of a surrendered soul, that the devotee knows that Krishna will always maintain him. Actually, another story that comes to mind in relationship, maybe I'm going too fast, sorry. प्रभुपाद जी जब वहाँ गए तो जो शिष्य थे जो उनसे जुड़े थे वो उस टाइम बहुत ही कुंठित थे, और भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग कष्ट में होते हैं या जिनको धन की आवश्यकता है या जो जिज्ञासु हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो मेरे पास आते हैं। तो जो ये लोग थे उस टाइम ऐसा कृष्ण की योजना से ऐसा सिचुएशन बना कि ये लोग दुखी भी थे और हिप्पी थे, तो गरीब थे, तो धन की भी आवश्यकता थी, और जिज्ञासु भी थे, ये जानना चाहते थे। तो उस समय प्रभुपाद जी ये कृष्ण भावनावी सिद्धांत लेके गए और इन्होंने प्रभुपाद जी के आचरण से देखा कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो हृदय से हमें कुछ संदेश देना चाहता है भगवान के बारे में। इनका खुद का कुछ निजीगत स्वार्थ नहीं है हमसे पैसा लेने का, ना ये हमने ठगना चाहते हैं। तो उन्हें वहाँ प्रेम की अनुभूति हुई, तो वो जुड़ गए प्रभुपाद जी से और प्रभुपाद जी की बात सुनने लगे, स्वीकार करने लगे। So as another example of that was a story told to me by Jai Shri Devidasi. तो एक और उदाहरण है जो जय श्री देवीदासी माता जी ने एक कथा बताई थी प्रभुपाद के बारे में। And she was in Hawaii, and Govinda Dasi, who was there, who was a very close early disciple of Prabhupada, asked Jai Shri to make a wool saffron coat for Prabhupada. तो जैसी देवी दासी हुवाई में थी और वहीं पे गोविंद दासी माता जी थी जो कि प्रभुपाद जी की शुरुआत के समय की शिष्या थी। तो उन्होंने उनको सेवा दिया था प्रभुपाद जी के लिए सैफरन कोट बनाने का। So this was, I believe, in the summertime, but in any case, in Hawaii it's always very hot. तो ये समर टाइम था, वैसे हुवाई में हर समय गर्मी रहती है। So Jai Shri told me that she was thinking in her mind, okay, where am I going to find a bolt of saffron wool in Hawaii? तो जयश्री माता जी मुझसे कह रही थी कि मेरे को हुवाई में कहाँ वो शॉप मिलेगा जहाँ पे मेरे को सैफरन कपड़ा मिलेगा, ऊन मिलेगा, सैफरन ऊन। Sure enough, she walks into the first store, and right in the middle of the display is a bolt of saffron wool cloth. तो फिर जब वो एक दुकान में गई, ग्रोसरी शॉप में, तो वहाँ बीचों बीच उन्होंने देखा एक कार्टन बॉक्स में सैफरन ऊल रखे हुए थे। She was amazed. तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। So she describes how she went back to the temple, and she had Govinda Dasi gave her the measurements, and also she, in the store, she was in a quandary about how she was going to make the hood. तो जब इसको स्टोर में थी तो उनको ये भी था कि कैसे मैं वो प्रभुपाद जी का जो कोट का हुड बनाएंगे, जो ऐसे ऊपर से लगाते ना, ये कैसे वो बनाएंगे। और गोविंद दासी के पास आई, गोविंद दासी ने उनको नाप दिया पूरा प्रभुपाद जी का। Now, how many of you have seen the actual photo of Prabhupada with the saffron wool cloth, wool coat and the hood? It's a mustard-colored furry hood. How many have seen this photo? कितने लोगों ने आपने देखा प्रभुपाद जी ने जो सैफरन कोट और हुड लगा हुआ पहना है, ऐसा किसने लोगों ने देखा फोटो? Good. So you have a visual of that coat, right? तो आपको उसका पता चल गया वो कैसा था वो हुड। So Jai Shri, after she saw and found the bolt for the coat, she had to find some material for the hood. तो जयश्री को कोट के लिए तो मिल गया था सामग्री, अब उसको हुड के लिए भी वो सामग्री ढूंढना था। So she looked around the store and she saw a section of toilet bowl seat covers. तो उन्होंने देखा दुकान में, तो उनको एक जगह मिला जहां पे टॉयलेट का हुड का कवर होता ना, वो रखा हुआ था। And that was what she made the hood out of. A little furry, fluffy, warm type of material that other people would use to cover their toilet bowl seats with. तो वहाँ के लोग जो टॉयलेट बोर्ड को कवर करने के लिए जो यूज करते थे, उनसे कुछ अच्छा सा मुलायम सा फ्लफी कवर मिला उनको सैफरन कलर का, वो जयश्री देवीदासी माता जी ने यूज किया प्रभुपाद जी का कोट का हुड बनाने के लिए। So Jai Shri was amazed that all this happened like out of the blue essentially, and so she wrote Prabhupada a letter and said how amazing it was that she found this bolt of cloth to make this coat for Srila Prabhupada. तो जयश्री माता जी बहुत ही आश्चर्यचकित हुई कि कैसे ऐसे हुआ कि ये सब हो पाया। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को फिर अपना अनुभूति एक
पत्र में लिख के दिया कि कैसे उन्होंने ये सब व्यवस्था की और कैसे उनके लिए उन्होंने कोड तैयार किया। Srila Prabhupada wrote her back a letter and saying, thank you very much for the coat. And yes, it is true, Krishna provides for all living entities, but for his devotees, he will actually, don't be surprised that he will take care of you specifically. तो फिर प्रभुपाद जी ने उनको पत्र जवाब दिया और धन्यवाद किया कोर्ट के लिए, और फिर बोला कि कृष्ण भगवान सबकी जरूरत के लिए व्यवस्था करते हैं और खासकर भक्तों के लिए तो जरूर करते हैं, तो कभी इसके लिए चिंतित नहीं होना है, ना ही आश्चर्यचकित होना है। So any other questions or और comments? किसी का कोई प्रश्न? Hare Krishna Prabhuji, thank you so much for enlightening class. I have just one question that you have met so many proper disciples. We have just seen in the early days, Prabhupada is given initiation by giving this letter and all, and the disciple not able to even meet once with Srila Prabhupada. So how they have faith upon Srila Prabhupada? Like nowadays when we see is that they are just connected with the counselor, not able to go to Srila Gurudev and all. So how is it possible, I mean to say, how they have faith? Did everyone hear the question? तो प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था कि हमने सुना है कि प्रभुपाद जी ने कई शिष्यों को चिट्ठी के द्वारा दीक्षा दी है। शिष्य और प्रभुपाद जी के आपस में कभी मुलाकात नहीं हुई है, केवल चिट्ठी से दीक्षा दी है, लेकिन पत्रों के माध्यम से दीक्षा हुई है। लेकिन शिष्यों का प्रभुपाद जी के प्रति इतना अगाध श्रद्धा, इतना विश्वास था कि उन्होंने प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को पालन किया। तो ये कैसे हो सका? आज हम देखते हैं कि भक्तों को इतना काउंसलिंग कर रहे हैं, इतना वो हो रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने, तो कैसे हो सका, ये प्रभु जी जानना चाहते हैं। I'll just explain my understanding, not that it's the absolute truth, but my opinion. And of course, Bhakti Siddhanta said anybody who begins a sentence with "I think" should finish their sentence in a closet. तो मैं अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है मैं वो बताऊंगा कि मैंने जो फील किया है वो आप लोगों को बताऊंगा, कि ना कि मैं ऐसे अनुमान के हिसाब से नहीं बताऊंगा। My opinion is that the evidence how that could happen, and I'm an example of that because I got my name, I was initiated by letter with the temple president doing the fire jagga. Second initiation, same way. And I'm one of thousands because I'd say maybe, well, I've interviewed 400 disciples over, and there's about maybe 4,000 that Prabhupada officially initiated. तो मैं खुद का अपना निजीगत अनुभव बताऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का जो दीक्षा हुआ, दोनों प्रथम दीक्षा और द्वितीय दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, दोनों पत्र के द्वारा ही हुआ, और टेंपल प्रेसिडेंट ने सारे रिचुअल्स किए थे। तो और ऐसे मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे हजारों शिष्य हैं। मैंने 400 भक्तों का साक्षात्कार लिया है, लेकिन ऐसे प्रभुपाद जी के ऑफिशियल डिवोटी 4000 से भी ज़्यादा होंगे। So, what's the answer? Why did I have faith that kept me going then and still has me chanting every day? Why? Okay. तो मैं बताऊंगा क्यों ऐसा क्या हुआ कि जो मेरी उनमें श्रद्धा है और आज तक भी मैं उसका पालन कर रहा हूँ, अब तक मैं जब कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। Because having a pure devotee on the planet, it does amazing things. Having that vapu, devotees say, Vani is more important than Vapu. But sometimes I think, actually, for me, Vapu is more important than Vani. Because without Prabhupada there, meeting him, seeing him personally, just knowing that he was on the planet, that connection was there. And evidence of that, as it's stated in the scriptures, when the pure devotee leaves the planet, then there's chaos. And that happened. So we can see that having a pure devotee tied and kept everyone together with that Shakti, just having his presence of a pure devotee is nothing to be second guessed. तो जब एक शुद्ध भक्त इस धराधाम पे उपस्थित होते हैं तो उनकी इतनी शक्ति होती है कि अपनी उपस्थिति मात्र से ही वो सब कुछ कंट्रोल करके रखते हैं। और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, जब ऐसे शुद्ध भक्त धराधाम छोड़ के जाते हैं तो पूरा अफरा तफरी मच जाता है, और ऐसा हुआ प्रभुपाद जी के जाने के बाद। तो मेरा पर्सनली ये है कि लोग बोलते हैं वाणी सेवा वपु सेवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वपु सेवा भी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद हमारे को दीक्षा हुआ, प्रभुपाद जी हमें ये अनुभव था कि
प्रभुपाद जी हैं इस धरातल में, कहीं पे भी हैं लेकिन हैं, इसी एक सोच मात्र से ही हमारा उनसे जुड़ाव रहता था, हम लगे हैं। I interviewed a devotee named Arjun Das from Mauritius. तो मैंने मॉरिशस से एक अर्जुन दास नामक भक्त हैं, उनका इंटरव्यू किया था। He was traveling in, I don't know if he was in Mauritius, but he was not in Vrindavan when Prabhupada left the planet. तो ये तो मुझे श्योर नहीं है कि मॉरिशस में, लेकिन वो वृंदावन में नहीं थे जब प्रभुपाद जी ने अपना शरीर त्यागा था, But he was in India. लेकिन वो भारत में थे। And the day after Prabhupada left the planet, there was a newspaper article, headlines. तो जब प्रभुपाद जी ने शरीर त्यागा, उसके अगले दिन सारे न्यूज़पेपर में ये मुख्य समाचार था कि प्रभुपाद जी ने शरीर त्याग दिया। And the headline was with a photograph of the ocean that had flames in it. And there was a huge thunderstorm, a cyclone thunderstorm that swept throughout India the day after Prabhupada left the planet. तो मुख्य समाचार जो जिस दिन प्रभुपाद जी ने शरीर त्यागा, उसके अगले दिन जो मुख्य समाचार था, फोटो के साथ था कि पूरे समुद्र में आग लग गई है और पूरे आग चारों तरफ हो रहा है इंडिया की तरफ, ऐसा समाचार में था। तूफान था, आग का भी बोला पैर में, Cyclone. हाँ ठीक है, बहुत भयंकर तूफान आंधी आया हुआ था उस टाइम पे। So this is physical evidence that the Shastras are correct. That when the pure devotee leaves, chaos ensues. And we saw it with that example of the weather, and trees were blown down, flame. Who has ever heard of flames on the ocean? तो ये शास्त्र का प्रमाण है कि जब शुद्ध भक्त जाते हैं तो पूरा अफरा तफरी मच जाता है, बड़े बड़े वृक्ष गिर रहे थे, और किसने सुना है कि सागर में आग लगता है? किसी ने सुना है? And they had a photograph in the paper of flames in the water on the ocean. और वहां पे पेपर में फोटो छपा था कि सागर में आग निकल रहा है, आग की लपटें निकल रही हैं। It was not his imagination. ये कोई किसी का मनगढ़ंत वो नहीं है। So similarly, as much power and negative strength there is when the pure devotee leaves, imagine how much strength and power there is in the atmosphere when the pure devotee is actually with us on the planet. तो इस उदाहरण से हम देखते हैं कि जब एक शुद्ध भक्त इस धराधाम को छोड़ के जाते हैं तो नकारात्मक शक्ति कितनी शक्तिशाली हो जाती है। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब ये भक्त यहाँ पे उपस्थित होते हैं तो फिर सकारात्मक शक्ति कितनी प्रबल हो जाएंगी। Does that answer a little bit? तो आपका उत्तर इससे कुछ हो रहा है? Any questions from the ladies? माता जी से कोई किसी का प्रश्न है? Hare Krishna, Prabhuji, thank you so much Haribol. for the wonderful class. Prabhuji, I have a question. Like you said, you must have firm faith in Krishna's planning, but sometimes, as per circumstances, we get stuck. Even we have firm faith in Krishna's planning, but how to deal with all those situations or circumstances when we get stuck? Even we have firm faith. So how to deal? Okay, explain a little bit more. Hard to hear. He's saying that Prabhuji, as you are having firm faith in Krishna, we too are having firm faith in Krishna, but sometimes circumstances are such that even after having faith in Krishna, we get stuck up and we are in little bit dilemma. So how to get out of it? यही प्रश्न है ना प्रभु जी आपका? How to get out of Maya? तो अब how we can understand the Krishna's plan in that situation? How we can understand Krishna's plan in that situation? We are having faith, but still we get stuck up due to the circumstances. So how we can understand Krishna's plan? What is Krishna's plan? Well, Prabhupada gives the example of riding on a boat. That sometimes the boat on the ocean is going along smoothly, but a storm comes and the boat is rocking. It's not so steady anymore. But how do we stay on the boat? By listening to the captain of the boat. We have to have faith that we're not going to fall overboard. The goal is to stay on the boat. So whatever bumps in the road there are, we have to know this example, that there will be bumps in the road. There are waves in the ocean. What do you expect?
So you're going to jump overboard in the ocean and the storm? No, you're going to stay on and follow the direction of the captain. He'll give us the life preservers. He'll provide everything for our safety. तो प्रभु जी एक उदाहरण बता रहे हैं कि जब हम समुद्र में होते हैं जहाज पे, तो अगर तो समुद्र शांत है तो जहाज बड़ा स्मूथली जा रहा होता है, लेकिन जब समुद्र में लहरें तूफान आने लगती हैं तो जहाज भी डगमगाने लगती है। लेकिन उस समय में हमें क्या करना है? हमें जो जहाज का नाविक है उसकी बात को मानना है, जैसा वो बोल रहा है वैसा करना है। हम जहाज से बाहर कूदेंगे नहीं, उसी में रहेंगे। तो सड़क पे भी चलते हैं तो झटके आते हैं, झटके लगेंगे, समुद्र में भी लहरें उठेंगी, लेकिन हमें करना क्या है? जो वहां पे उसका जो नाविक है बस उसकी बात को मानते रहना है। And basically, in my experience, I'm not free from anxieties or the bumps in the road or the rocky ocean. I've experienced that. But I have found in my experience that the shelter is in the holy name. And the reason for my anxiety or finding maybe that I don't have as much faith, I should go back to chanting my rounds better. When you hear your rounds, then again, Prabhupada said, I feel no fear. So that also means free from anxieties that will calm that ocean. And the way that we hear our rounds is so essential that we cannot take it for granted. You know, some devotees, I used to be a bhakta leader. I don't know if you explained that. You know what a bhakta leader is? Bhakta leader. So, when I was a bhakta leader, some of my bhaktas, I would hear them chanting up against the temple wall. They were, who is Nish Nish? Is there a planet called Nish Nish? That is not Krishna's name. So we have a tendency, and myself included, to be lazy. And if we're lazy, then the taste will not be there. And the taste is in hearing, where the sound of Krishna's name has to come out of our mouth and into our ear. Now, over and above just hearing the sound vibration, over and above that, to gain even more taste, I have found that it's our heart and the feeling that we put into that vocal of Krishna's name. Prabhupada's, you probably heard, chant like a child crying out for his mother. तो मैं खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूँ, मेरे को भी डर लगता है, मेरे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, अगर हम हरि नाम का शरण ग्रहण करते हैं तो फिर हम इस भय से बच सकते हैं। प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं आई डोंट हैव फियर, तो उसका यही है कि हमको हरि नाम का शरण ग्रहण करना है। और जब हम हरि नाम का जप करते हैं तो पूरे ध्यान पूर्वक करना है, जो हम शब्द बोल रहे हैं उसको कान से सुनना है, और केवल यही नहीं, शब्द जो हम उच्चारण कर रहे हैं नाम का, हृदय से भाव के साथ हमें उच्चारण करना है और ध्यान पूर्वक उसको श्रवण करना है। लेजी या कैजुअल एटीट्यूड नहीं रखना है। जैसे कि मैं भक्त लीडर हूँ, मेरे अंडर में कुछ भक्त ट्रेनिंग में है, तो मैं देखता हूँ वो हरि किस हरि राम 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 करते हैं, ये क्या है, ऐसे हमें लेजी एटीट्यूड नहीं रखना है। ध्यान पूर्वक जप करना है और ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करना है। अगर हमको घबराहट होती है, फिर भी हिचकोले लगते हैं, तो हमको नाम प्रभु का और तीव्रता से शरण ग्रहण करना है। ये मेरा अनुभव है। Let's hear a round of applause for this translator. What a great job. Really fantastic. Really good. And I've never lied to him before, anyway. Oh, I've never met you before, have I? Small dad joke. But there's another story from my memory series that gives evidence of how our attitude or feeling should be when we're chanting. This story is from Sumati Devi Dasi. She joined very early years of the movement in Boston, Massachusetts. तो सुमाती माता जी, एक और जो प्रभुपाद सीरीज मेमोरी है उसका एक इंटरव्यू है सुमाती माता जी का, बहुत अर्ली समय में बॉस्टन में जुड़ी थी, जप के ऊपर है ये।
So in the early days, they would have a radio show where they would reenact one of the stories from the Krishna book. तो शुरुआती दिनों में रेडियो में प्रोग्राम होता था और उस प्रोग्राम में कृष्णा बुक के स्टोरी के ऊपर वो लोग उसको एनैक्ट करते थे, उसका डायलॉग बोलते थे उसी लहजे में. So this particular story was the story of Krishna and Kaliya. तो ये जो कथा थी ये कृष्णा और कालिया की थी. Sumati played Mother Jasoda. तो सुमति माता जी ने यशोदा माता जी का रोल किया. Satsvarup Goswami, I don't know who he played, but Satsvarup Goswami, everyone know who Satsvarup is? Okay. He So wrote Prabhupada Leela. तो सतस्वरूप गोस्वामी जिन्होंने प्रभुपाद लीलामृत लिखा है उन्होंने भी एक पात्र का किरदार निभाया. So Satsvarup produced the show, and he played it back for Srila Prabhupada one day after they had produced it, and it went on the air. तो जब रेडियो में सत्यस्वरूप दास प्रभु ने उसको प्रोड्यूस किया और जब रेडियो में वो टेलीकास्ट हो गया तो उसके अगले दिन प्रभुपाद जी को उन्होंने सुनाया. And this particular portion of the play that was recorded on the tape, the radio show, was where Krishna was enveloped in the coils of Kaliya. तो ये जो पर्टिकुलर सीन था कि इसमें कृष्ण कालिया के फन के द्वारा बांधे गए थे, वो वाला लीला सुन रहे थे. And Sumati, playing the role of Mother Jasoda, really got into it. और सुमति माता जी जो यशोदा माता जी का किरदार निभा रही थी वो एकदम यशोदा माता जी के चरित्र में घुस गई थी. Imagine if you're a mother and your child is wrapped up in the coils of a snake. You would be going, Krishna, Krishna, Krishna. तो आप अनुमान करके देखें कि आप माँ हैं और आपके पुत्र को सांप ने अपने फन में लपेट लिया है तो उस समय आप कैसे क्रंदन करेंगे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा. When Srila Prabhupada heard that, he told Satsvarup to tell Sumati to always chant for Krishna like that. तो जब प्रभुपाद जी ने वो सुना तो उसके बाद उन्होंने सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज जी से बोला कि आप सुमति माता जी को बोलिए कि वो कृष्ण के लिए हमेशा ऐसे ही जप करें, कृष्ण का नाम लेके. So feeling is very important. तो जप के समय भाव बहुत जरूरी है. This is not mundane process, so we should take it seriously. And if we do, then Krishna promised us to give us that taste. तो ये कोई लौकिक विधि नहीं है कि जस्ट इसको आप ऐसे ही करे जा रहे हैं. आपको इसको गंभीरता पूर्वक पूरे भाव के साथ जप करना है और जब इस प्रकार करेंगे तो फिर कृष्ण उसी प्रकार से आदान प्रदान करेंगे. Any other questions? और किसी का कोई प्रश्न है? Hare Krishna Prabhuji. How can we develop our attachment for Srila Prabhupada? I'm sorry, start again. I didn't know I couldn't see where you were. How can we develop our deep attachment for Srila Prabhupada? Like our sannyasi disciples of Srila Prabhupada, they have firm faith in the instructions of Srila Prabhupada and they are deeply attached to him. So we the new generation, how can we develop that type of attachment? Good question. Here's your answer. Do you have a pen and paper? You have pen and paper? Pencil? Write this down. लिखिए. बाकी लोग भी लिखिए. Go to youtube.com. youtube.com पे जाइए. You got that? And then there's a search bar. वहाँ पे एक सर्च बार है. All right. In the search bar, you type in Prabhupada space memories. वहाँ पे आप लिखे प्रभुपाद स्पेस मेमोरीज. And when you get to that page, it's my channel. They call them channels, right? You hit the word subscribe. जब वह खुलेगा तो उस पे सब्सक्राइब कीजिए. And then there's a little bell there. You click on that bell. फिर उसके नीचे बेल है, उसको भी क्लिक कीजिए. And you will get notification when I post the new memories of Prabhupada. तो आपको जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो जानकारी मिलेगी. And I guarantee you, and anyone here, I guarantee you that if you don't become Prabhupada conscious and have your attachment for Prabhupada increase, I will give you your money back.
तो मैं ये आश्वासन देता हूं आप सबको, अगर उसको देखने के बाद आपका प्रभुपाद के साथ आसक्ति नहीं बढ़ती है, आपकी श्रद्धा नहीं बढ़ती है, तो मैं आपका पैसा आपको वापस करवा दूंगा. Of course, YouTube is free, right? बट लेकिन ये चैनल फ्री है. So that's another dad joke. Bad. ये भी एक मजाक ही हो गया. Sorry for that, but I guarantee. Here's an example. Here's proof that these Prabhupada oral histories is like Prabhupada says, I will live forever in my books, right? So Prabhupada also lives forever in these oral histories. And I'll give you a proof of that. When I'm from Los Angeles, and every Saturday and Sunday, I go to the temple when the devotees honor their breakfast prasadam, and I show for half an hour the Prabhupada memories. तो मेरा ये पर्सनल अनुभव भी है इसका, मैं इसका प्रमाण दूंगा कि मैं लॉस एंजलिस में हूँ और हर शनिवार और रविवार को मैं लॉस एंजलिस मंदिर जाता हूँ, और वहाँ पे सुबह जब ब्रेकफास्ट का प्रसादम होता है तो उस समय हम ये मेमोरीज का आधे घंटे का वीडियो सभी भक्तों को दिखाते हैं. So one morning before I started the video, a Bhakta Brad came in and said, Siddhant, I want to tell you something. तो एक दिन जब हम ये वीडियो दिखाने वाले थे तो एक भक्त है ब्रैड, वो दौड़ के आया, उन्होंने बोला सिद्धांत मैं कुछ कहना चाहता हूँ. I said, yes, what is it? He was so enthusiastic. तो तुम बहुत उत्साही हो, क्या कहना चाहते हो बताओ. He said, I want to let you know that I joined this movement just because I've seen all of your Prabhupada memories. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस ISKCON मूवमेंट में इसलिए जुड़ा क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे प्रभुपाद मेमोरीज वीडियो देखे, उससे प्रभावित होकर मैं जुड़ा. He said, I didn't read any of Prabhupada's books, but I joined because of these oral histories. मैंने आज तक प्रभुपाद का कोई भी किताब नहीं पढ़ा है, बस आपकी ये मेमोरीज वीडियो देखकर ही मैं जुड़ा हूँ. He's now second initiated as Bhakta Das, initiated by Giriraj Maharaj. तो अब वो गिरिराज महाराज जी के शिष्य हैं, ब्राह्मण दीक्षित शिष्य भक्त दास प्रभु. Should we go back? We need to go. Oh, okay. One last. We're running out of time, so one last question or आखिरी comments. प्रश्न किसका? बली महाराज प्रभु. Hare Krishna Prabhuji, thank you so much for such a wonderful class you gave. Haribol. Prabhuji, like we read in Srila Prabhupada books that sometimes the philosophy is very strongly presented and Srila Prabhupada is sometimes really heavy in the lectures and even in book. So how he was dealing with the devotees personally? Like in our time also we see many devotees are having some problem in different aspect in terms of following four regulative principles. Some bad habits are also there. So how Srila Prabhupada used to deal with the devotees? It depends on the person. There's no one hard and fast rule how he would respond. So it just takes further analysis of the memory series that are now also in book form to study because one size didn't fit all. Prabhupada was very personal. So depending on the person, like with Shruti Kirti, he knew that Shruti Kirti would just break down in tears if he chastised him. Guru Kripa, I don't know, do you know who Guru Kripa is? He's like a heavy kind of guy, he's strong, if he wasn't a devotee, he'd be a street thug, I don't know, but he's the most Prabhupada man I've met, so nothing against Guru Kripa. But Prabhupada knew his personality, and he could take chastisement. So it just depends on the person and how to deal with them. You have to be very careful. And Prabhupada was very careful not to alienate anyone whereby they wouldn't have a chance to come back. So people might have problems. They can't control their senses. Okay, that happens. But if they're criticized and found fault with and not dealt nicely when they come back to the temple, and if they're shunned, then they'll never want to come back. So we have to greet everyone that might be falling away that comes back, to greet them with open arms, because Prabhupada did that quite often. When he saw someone he hadn't seen for years, Prabhupada would hug them and give them a garland and welcome them back into the family.
तो जो प्रभु जी का प्रश्न था, तो उसमें प्रभु जी बोल रहे हैं कि सभी को एक साइज का कपड़ा नहीं आता है, सब पर्सनल है, सबका अपना अपना व्यक्तिगत डीलिंग है। और प्रभुपाद जी बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत थे, एक एक भक्त से उनके संबंध में बहुत ही उनका व्यक्तिगत व्यवहार रहता था। और मेन प्रभुपाद जी का ये उद्देश्य था कि किसी के साथ इतना भी ऐसा व्यवहार ना करे कि वो वापस लौट के ही ना आए। यहाँ तक कि कई कई सालों बाद भी भक्त लौट के आते तो प्रभुपाद जी उनका हृदय से स्वागत करते थे, माला पहना के उनको वापस वेलकम बैक टू फैमिली उनको स्वागत करते थे। तो सबके साथ इसका कोई एक जनरल आंसर नहीं हो सकता, पर्सनल सबके साथ संबंध है, पर्सनल रिलेशन है, उसके हिसाब से प्रभुपाद डील करते थे। तो हम भी यहाँ पे अगर कोई 4 नियम का पालन नहीं कर रहा है या कुछ किसी में कुछ है तो हमें देखना है और सही तरीके से उसको गाइड करना है, व्यवहार करना है, ताकि वो मंदिर में जुड़ा रहे। And I'll leave you with just one story, one quick story. I'm being told we got to go. From Guru Kripa. Just mentioning Guru Kripa reminds me of this really amazing Sankirtan story. Okay? So, Guru Kripa was in India, southern part of India, and he was out to make life members. And he went to a big factory, went to see the CEO, and wanted to present Prabhupada's books to make him a life member. तो एक मैं छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ। गुरु कृपा प्रभु जब भारत में थे, दक्षिण भारत में प्रचार कर रहे थे, तो लाइफ मेंबर बनाने गए थे, तो एक बड़े से उद्योगपति के पास गए वो, और प्रभुपाद जी की पुस्तक लेके गए उनके पास। So when he went into the CEO's, the director, the head of the corporation, there were 2 or 3 other fellows there who were friends of the head, and after Guru Kripa laid out the Prabhupada's books and the explaining about life membership, one of the men said, "Oh, I know the Gita. Actually, to me, Karna is the hero of the Bhagavad Gita." तो जब गुरु कृपा प्रभु उन उद्योगपति के सामने प्रभुपाद जी के बुक रख के लाइफ मेंबर बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ पे उनके और 2-3 मित्र भी थे। तो उसमें से एक मित्र ने बोला, ओह मैं तो गीता जानता हूँ, मेरे हिसाब से तो कर्ण जो है भगवत गीता का सबसे सम्मानीय और मेन पात्र है। And so Guru Kripa said, "Karna? No, Arjuna is the hero." तो गुरु कृपा जी ने कहा कि कर्ण नहीं, अर्जुन है वास्तविक नायक। And the man said, "No, it's Karna." तो वो आदमी बोल रहा नहीं, कर्ण। And they were going back and forth, तो दोनों में विवाद होने लगा, कर्ण अर्जुन, debating. Karna, no, Arjuna. And then Guru Kripa started to get angry. He said, "No, it's Arjuna." And he started becoming vehement and getting angry with this man. तो दोनों में ऐसे चलने लगा, कर्ण नहीं अर्जुन, नहीं कर्ण नहीं अर्जुन। तो गुरु कृपा है ना गुस्सा हो गए, बोले नहीं अर्जुन है, काफी क्रोध में आ गए। And so this man said, "Well, what good is this guru doing for you? Look how angry you're getting." तो फिर उस व्यक्ति ने बोला, देखो तुम्हारा गुरु क्या कर रहा है, ये कैसे गुस्सा हो रहा है। Guru Kripa said, "Well, a year ago I would have punched you in the face." तो गुरु कृपा प्रभु ने बोला, अगर 1 साल पहले मिले होते तो तुम्हारे मुंह पे मुक्का मार देता। Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. So we are so grateful to His Grace Siddhant Prabhuji for such a wonderfully explaining pastimes of Srila Prabhupada, so many pastimes. In fact, we didn't realize how time went. So thank you so much, Prabhuji. And in fact, we would like to hear more and more from you. So thank you for showering your blessings. I do have one other comment. It's a shameless promotion, so if you'll allow me for one shameless promotion. Where's this bag? Can you show me the bag? So, also take notes that I do have a website called PrabhupadaMemories.com. And when you go to that site, you will see that all 95 of the videos that consist of 150 hours of nectar, like we've been hearing from today, 150 hours. So if you just listen to a half hour a day, that will take up 10 months of your life to get through from the beginning to the end. And with the benefit of technology, all 150 hours fit on a 512
gigabyte flash drive. Who signs the checks in this temple? Who's the accountant? Who's the president? Who's the decision maker? Okay. So we have distributed one of these. I only brought 2 to India. And I'm going to Baroda tomorrow. This is the last one I have. And for $75 off the price, I can give it to you for $300. It may sound like a lot, but you're getting a lot. It comes out to $3 a video. So the offer is there. So it's up to you. Thank you very much for listening. I really appreciate the attention. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. And in the future, whenever you come to Delhi, India, please by default, please kindly come to ISKCON Dwarka, and we all are your children. Please kindly bless us, guide us. Thank you so much, Prabhuji. So let's express our gratitude to Prabhuji from the core of our heart by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Grace Siddhant Prabhu Ji ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki.